The Indian pair of Rohan Bopanna and Ratuji Bhosale beat Chinese Taipei pair in scripted and spectacular come-from-behind win on Saturday in the mixed doubles tennis final at the Asian Games. Prime Minister Narendra Modi on Saturday hurled accusation upon the Congress government in Chhattisgarh, saying that it did scam in the free ration which the centre distributed during the COVID pandemic. The Reserve Bank of India has extended the deadline for the exchange of 2000 notes till October 7. RBI had earlier announced the withdrawal of 2000 banknotes from circulation on May 19th. Nagaland is one of the few states where the forensics is still under the Nagaland Police Department. While in many states forensics is under Home Department, when asked about if the Nagaland Police has any plans of requesting the Nagaland government to shift forensics at Home Department, Nagaland's Director General of Police Rupin Sharma, while speaking exclusively to HornbillTV, said that they have written to the state's government regarding the same and that now a government decision is awaited. Also speaking on if there was low conviction due to lack of amenities in the Nagaland's forensic department, DGP Rupin said, saying that would be not true. Our focus has never been on investigation, and only when focus is given to investigation, forensics will improve, he said. Normally, the forensic science is always under the Ministry of Home Affairs, or it should come under Home Department. But Nagaland's forensic department is still under Nagaland Police. So has there been any plans to shift or the department? And also, sir, do you think that due to the lack of amenities in the Nagaland Forensic Laboratory, the conviction rates are kind of slow here, sir? So actually, it's not that the forensic lab should be under the police under the Home Department. Okay, that is not true. All right. The legal position is that forensic analysis and expert opinion should be independent of police. Okay, so they should not be under the police. So that is the position. So because of that, earlier I think in most states, yes, the forensic labs were under the police. So slowly they started, people realized that it had to be independent. So a lot of states have started separating the forensic science laboratories from the police. So currently in Nagaland, the forensic lab is under the police. However, we have also written to the state government saying that it should be put under the Home Department. So we have no objection on that. It is for the state government to take a call. Hopefully it will happen soon. Now, you're asking that forensic lab to thik na thakile nawale it is under the police department, whether it is leading to problems in convictions and all. It will be, I don't think it is true. Investigation, we don't need forensic labs. Yes. Okay, so the improvement in the quality or quantity of equipments or manpower or experts of the forensic science labs will depend on the amount of forensic work which is given to the forensic labs. Okay, now just to give you an example, that we are having a large number of cases in drugs matters, and we realized that we were sending our samples. We have placed that order, so the equipment is likely to be installed in the next 5, 6, 7 days, yes, and functional by the middle of October. So all our previous forensic samples will also be examined very, very quickly. Okay. So when there is a requirement, you will go for that. Yes. Okay. When there is not a requirement, there is no point in having that. Yes. So that requirement will come from the emphasis on policing. Policing laga kaam, investigation laga kaam hoile hi tate jabo. Ito case na register korule forensic lab rakhile bhi kaam nahi dona. So that is the problem. Moving on to the next news. Kokomi spokesperson Khuraijam Atuba on Saturday said that reports of Meitei Hindus targeting Christians minority in Manipur is a lie and that it was never a religious issue. He said Meiteis never targeted Christians and hundreds of churches are still standing tall in Imphal. Atuba also said it is more about narco-terrorism and that the Meiteis are only defending the land, uprooting poppy cultivation,
preserve forest and resisting narco-terrorist activities in Manipur. Have been campaigning and spreading certain propagandas that the recent violence that has happened in Manipur is an attack to the minority Christians by the Hindu majority. But we are here to clarify that the religion has no role. There is nothing to do with the religious issue in Manipur. The Meitei Hindu has never targeted Christians in Manipur. Right now, even in the Meitei-dominated areas, the world can still see that there are hundreds of Christian religious sites, the churches, doing their services every week, every day, and their churches are still standing tall in Imphal and several other Meitei-dominated areas. And it was completely lie, a completely false narrative, false propaganda that the Meitei Hindu has targeted the Christians in Manipur. It is never a religious issue. It is more of narco-terrorist aggression and the Meitei community trying to defend the land, preserve the forests, uproot the poppy cultivations, destroy the poppy cultivations, and resist all form of narco-terrorist activities, all form of illicit drug trafficking in Manipur. Tripura will now get a direct train service to Mumbai through the Kamakhya Lokmanya Tilak Express. This was informed by Tripura's Transport Minister Sushanta Chaudhary on Saturday, expressing his gratitude to Union Minister of Railways Ashwini Vaishnaw for approving the project. He said people will immensely benefit from it. The stoppages of the express between Guwahati and Agartala will be at Ambassa, Dharmanagar, Badarpur, New Haflong, Lumding, Hojai and Chaparmukh stations. It will be a weekly service. The train will take 55 hours to reach Mumbai from Agartala, and prices of the tickets will range between 3,500 to 8,700. যে ভাড়া থাকবে মুম্বাই পর্যন্ত তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাড়া থাকবে। নিচের দিকে থাকবে ৩৬৫৫ টাকা, তার উপরে থাকবে ৪৭৪৫ টাকা বা তার উপরে থাকবে ৮৬৮৫ টাকা। এই হচ্ছে ভাড়া। সম্পূর্ণটা এসি, এটা এসির ভাড়া এখানে প্রদান করা হয়েছে এয়ার কন্ডিশনে, এবং উইকলি সেটা চলবে বৃহস্পতিবারে এবং সেখান থেকে রবিবারে আবার আগরতলার উদ্দেশ্যে সেটা রওনা হবে। এই ঘোষণাটা আপনাদেরকে আমরা প্রদান করলাম যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। কুমারঘাট এবং উদয়পুর স্টেশন তার আওতায় রয়েছে এই অমৃত ভারত স্টেশন যে স্কিম, তার আওতায়, যার মধ্যে খরচ করা হবে ৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আমাদের ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর রেল স্টেশন, তাতে ৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অমৃত ভারত স্কিম যে স্টেশন, তার আওতায় খরচ করা হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে খরচ করা হচ্ছে ৫,১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ত্রিপুরাতে খরচ করা হচ্ছে ৯৬.৬০ লাখ, মানে কোটি ৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। উত্তর পূর্বাঞ্চলে টোটাল সারা দেশে খরচ আমাদের ৫০৮টা স্টেশন, তার মধ্যে ত্রিপুরার ৩টে স্টেশন। Tripura Transport Minister Sushanta Chaudhary on Saturday said that the strike called by TIPRA Mota has received mixed reactions from the public, but band could never be a solution to problem. He said the state government don't want band to be called by any political party, but since it is a democratic right, cannot curtail it. The minister further informed that the Transport Department has received grievances from some passengers travelling to Agartala who reportedly got stuck in North Tripura district. So far, our knowledge now, we have received mixed reactions from across the state. That much I can say, because it's a very band is not a solution. We don't want any band to be called by any political party whatsoever. But since it is also right on the part of all the political parties to go for a band, so we don't want to curtail the rights of any political party. But band has not been successful in the urban areas, the feedback which we have received as of now. Okay, in the ADC areas, they have
convenient one in the ADC areas. So it is mixed reactions we have received. There has been disruption in few places. Like my Secretary Transport and Tourism, Mr. Chakma, was telling me few minutes back that people, they got stuck up on the way to North District while traveling through train. So he received a number of phone calls from the passengers, and passengers there in the solicited help from the police. But since I think the political party, the Motha political party, they have condemned the ball, they should also realize that bond is not the solution. We believe in democracy, we believe in development. So through development only, this bilateral discussion, this solution can be sorted out. That's it. The Indian pair of Rohan Bopanna and Ratuja Bhosale scripted a spectacular come-from-behind win in a Saturday in the mixed double tennis finals to beat Chinese Taipei pair. The 9th-seeded Zheng Hao, Huang and Eng Shualiang 2x6, 3x3, 10x4. With the win, India maintained the stellar streak of at least a gold in each of 6 Asian Games editions this century. This was Bopanna's second medal at the Asian after the Indian tennis veteran won the men's doubles gold at Jakarta 2018, while the Ratuja, it was her maiden medal haul at the Continental Meet. This was also India's second medal in tennis at the Hangzhou Asian Games after the pair of Ramkumar Ramanathan and Saket Mayani got the silver medal in men's doubles after losing the final to Chinese Taipei pair of Jason Jung and Yu Shua-Su. Time for a short break. We'll be back with more news. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, or the National Solar Mission, was launched on 11th January 2010. JNSM is a major initiative of the Government of India with active participation from states to promote ecological sustainable growth while addressing India's energy security challenges. Welcome back. Moving on to the next news. Body of a 30-year-old man found under mysterious circumstances in Uttar Pradesh, Auraiya district. The deceased was identified as Dharmender Singh Bhadoria and was found outside a house near the village in Bela police station area of Auraiya district on Friday night. Meanwhile, the family members of the deceased youth alleged that the death as a case of murder. As per the reports, police reached the spot and took possession of the body, which was later sent for post-mortem. A case has been registered under appropriate sections and legal actions will be taken as per rules. The police have started investigating the case. ये भी सूचना मिली है जिसका घटनास्थल निरीक्षण हम सभी लोगों ने कर लिया, राजपत्रित अधिकारियों ने भी कर लिया, थाने से पुलिस ने कर लिया है। ये धर्मेंद्र सिंह भदौरिया सन ऑफ सावंत सिंह भदौरिया, ये मलहौसी गांव पड़ता है, थाना बेला में। लगभग 30 वर्ष इस युवक की उम्र थी। ये नोएडा में रहकर नौकरी करता था। ये जैसा कि आसपास में बताया जा रहा है, ये एक कुशवाहा परिवार के घर के बाहर इनकी बॉडी मिली है, जिसमें कुछ आसपास खून पड़ा है और ऊपर और नीचे देखा गया है तो कुछ वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी दिखे हैं। तो ये जो यहाँ पे लड़की है, ये उसके साथ इसका बताते हैं कि प्रेम संबंध रहा है पूर्व में। तो क्या कॉज ऑफ डेथ है उसके लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अभी शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिवार के द्वारा जो भी तहरीर दी जाती है उस पर समिति धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई है आज? घटना क्या हुई है कि वहाँ रात में सो रहे थे, कड़ाके से नींद में सो रहे थे। गांव के चंद लोग मोहल्ले के 3 आदमी आए, बोले ठेकेदार तो हमने कोई मेला वाला आया होगा, बाहर निकले तो उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा भतीजा यार आया उनके यहाँ वीर सिंह के मकान के अंदर घुसा है। तो हमने वीर सिंह के अंदर घुसा है, कैसे घुसा, इस समय क्या टाइम हुआ, तो बोले 2 बजे। तो 2 बजे तो हम जाएंगे नहीं,
आप उन्होंने को तुम्हारे यहाँ वहाँ है कौन? तो बोले कोई नहीं, फोर्स है। तो हमने फोर्स अपने एसीडी लेगी। जब फोर्स वहाँ है तो फोर्स अपने एसीडी ले ले, हम क्या करें जाके वहाँ? हम सुबह चलेंगे आपके पास वहाँ। ये लोग फिर साथ वहाँ गए। फिर उन्होंने एक पंडित जी ने आलोक को फ़ोन किया। आलोक वहाँ दोनों सिपाही पहुँचे, बोले चलो ठेकेदार वहाँ यार तुम्हारा भतीजा पिए है। हमने पीता नहीं है, ये दिल्ली से काम करके आया है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कब आया है। लेकिन जब आलोक घर पे पहुँचे तब वो जिंदा था। ये आलोक के बयान है। उस बच्चे को ले आओ, अभी फिलहाल निबट जाएगा। हम रात में नहीं जाएंगे। आलोक वहाँ से चले आए। चले आने के बाद में फिर 2 घंटे बाद प्रधान जी मेरे यहाँ पहुँचे, विजय प्रधान। विजय प्रधान से हमने बातचीत की तो हम क्या करें जाके यार वहाँ? हमको लगता है कि वो एक्सपायर हो गया मारकूट में, ये झूठ बोल रहा लड़का। सवेरे आधा घंटे बाद प्रधान बैठे रहे, हमने प्रधान जी को अकेले भेजा तो वहाँ पे मालूम हुई साहब वो इस लड़का एक्सपायर हो चुका। अंदर ही उसको मार दिया गया। अंदर जब मार दिया गया तो उसको बाहर निकाल के बाहर डाल दिया गया। फिर रात में पुलिस समझौता कराने आई थी क्या? हाँ, रात में पुलिस हमारे पास आई थी, चलो वहाँ जो बच्चे को लेवा लो। हम कहीं नहीं जाएंगे 2 बजे रात को। 2 बजे रात को हम क्यों जाएँ वहाँ पे? कौन कौन आया था? आलोक थे, एक सिपाही उनके साथ में था। सिपाही को नहीं जानते। 2 सिपाही थे? हाँ, 2 सिपाही थे। कहाँ पे नियुक्त हैं वो? वो नियुक्त याकूबपुर चौकी पे। लड़का काम कहाँ करता था? ये नोएडा, दिल्ली। प्राइवेट जॉब करता था? हाँ, प्राइवेट। Prime Minister Narendra Modi on Saturday hurled accusation upon the Congress government in Chhattisgarh, saying that it did scam in the free ration which the centre distributed during the COVID pandemic. Speaking at Parivartan Mahasankalp rally in Chhattisgarh's Bilaspur, PM said no one has done as much injustice to the poor as the Congress did. साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब ने इस भाइयों बहनों कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब के इस बेटे ने यह तय किया कि मैं अपने हर गरीब भाई बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया। आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, आप सुनिए, गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आज यहां का हर लाभार्थी कांग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ हमारे हक का राशन कहां? The Reserve Bank of India has extended the deadline for the minute hassles. The Apex Bank had also provided the exchange facility at its 19th regional offices. According to RBI data, on May 19th, 2,000 notes of the total value 3.56 lakh crore were in circulation. The bank had received 3.42 lakh crore worth of 2,000 notes back as of September 29. This means only 0.14 lakh crore worth of notes are still in circulation. RBI said in a statement that around 96% of 2,000 notes in circulation as on May 19th has been returned. The RBI said from October 8, deposit or exchange at bank branches shall be stopped.
However, it can continue to be exchanged by individuals and entities at the 19th RBI issue offices up to a limit of 20,000 at a time. Individuals entities can tender 2,000 banknotes at the 19th RBI issue offices for credit to their bank accounts in India for any amount, and individuals entities from within the country can also send 2,000 banknotes through India Post addressed to any of the 19th RBI issue offices for credit to their bank accounts in India. MLAs and ministers were called and special campaign plan made for different sections. The party's Mahila Morcha had been handed the responsibility to create awareness women to know their rights. On issuing party tickets to women, Union Minister of State Kaushal Kishore said the party is ready to work for the upliftment and women and will issue tickets to women every election. Minister of State Vijay Lakshmi Gautam, who reached the meeting, said that the respect of women is increasing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and their participation will also continue to increase in the coming times. 31% का आरक्षण पास हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उनको मंजूरी दे दी है, आरक्षण लागू हो गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरक्षण संगठन में देने का काम करती आ रही है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा, जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा पूरी तरीके से। विपक्ष खुद कई बार लेकर के आया था, फिर वो पास क्यों नहीं कराया। आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आए, वो पास हुआ। अब उनको इसमें परेशानी हो रही है। अभी 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बैठेगा जो परिसीमन करेगा सीटों का, और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, कमेटी बनकर के उन सीटों का रिजर्वेशन करने का काम करेगी। क्योंकि 33% आरक्षण लागू किया गया है और हमारी पार्टी तो पहले से ही महिलाओं को लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद आपको बात करेंगे तो ज़्यादा निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार पूरे देश की महिलाओं को, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे आएंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं देती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ। वो पहले से ही इसी तरह की बातें कर करके इसको रोक रहे थे। निश्चित रूप से जहां अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, उनका सीट पहले से सुनिश्चित है और निश्चित रूप से वहां अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ती हैं और बाकी जो भी निर्णय है हमारा पार्टी से। That is all we have for the Prime Time Bulletin. Thank you for watching Hornbill TV.